हम लोग आता है लेके जाने के लिए। Okay. Please keep your mic off. $34. Okay. Should we start now? It is 6 o'clock now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. We are starting with a new chapter because the sine branch and the Santa Cruz branch are not equalized in their topics. So it will be difference. So I'm starting with a new chapter, that is adsorption and colloid, for the online lecture. Now this adsorption and colloid is quite, I've just taken an easy topic, but thoda sa lengthy hai. It is all theoretical, and these things you're going to study first time. Now, what is adsorption? What is adsorption? To answer this question, let us say, if we take a piece of chalk piece, and put it in a ink. Is a ink.
If you put the chalk piece in the ink, what will happen? What is your observation? Chalk will absorb the ink. Chalk will absorb the ink. Chalk will absorb ink. What do you mean that chalk will absorb ink? If you break the piece of chalk, right? If you break it, you'll find this is all blue in color. Bluish. Outside it will be bluish as well as inner side also will be bluish. This all will be bluish. Yes, sir. The chalk has absorbed ink. Absorbing. If you take a sponge and put in water, sponge will absorb water. You know what is sponge, na? Sponge रहता है ना? Yes, sir. पता है. Absorb water. So both this example what I gave you are the example of absorption. That means in absorption, one substance goes in the interior of another substance. That means the ink goes inside the chalk. And if you keep it for longer time, the whole chalk will become bluish in color. And if you write with the chalk, it will write in blue color. Because the ink goes inside, in the interior of the chalk. Same thing, if you put a sponge in water, the sponge is very light. But if you keep in water for longer time, it will become heavy. Water will go inside it and occupy each and every space inside the sponge. So both these examples are of absorption. So absorption is a bulk phenomenon. Absorption is what? A bulk phenomenon. Bulk phenomena means one substance goes in the interior of the another substance. One substance goes in the interior of another substance. Okay. Now, if you take a water bottle, containing water, and keep in the fridge. And then you remove it and keep on the table. What you'll find on the water bottle? Water. Water drops. droplets on the surface. Water droplets on the surface. Are these water gone inside the plastic? Or they only on the surface? ये जो water droplets, are they gone inside the plastic? क्या ये पानी plastic के No, अंदर sir. है It's क्या only पानी? on the surface. No, sir. No, they get They get accumulated on the surface of the water bottle plastic water bottle. They are not going inside. So this process, this is called acha. If you take a spoon and dip it in a milk which is cool, and you remove the spoon, what you'll find on the surface of the spoon? What you'll find on the surface of all the malai will be there on the surface. If you put in a spoon, put in a milk.
and you remove the spoon. So on the surface of the spoon, you'll find milk is attached, and even the what is cream is attached. मलाई जिसको हम लोग मलाई बोलते हैं वो भी attached रहेगा. The milk doesn't go inside the spoon. So these two examples what I gave you, one is a water bottle and second is a spoon. This is a surface phenomenon. Surface phenomena in which the water remain only on the surface of the water bottle, and in the second case the milk or the cream remain only on the surface of the spoon. It doesn't go inside the spoon. So these are surface phenomena, and the previous one was bulk phenomena. Now this surface phenomena has got another name, and that is called as adsorption. Adsorption. And the previous one was absorption. See the spelling, खाली एक ही word, एक ही letter का difference है. B is replaced by D. So adsorption is a surface phenomena, and absorption is a bulk phenomena. What do you mean by adsorption? Accumulation. Accumulation or concentration of one substance on the surface of the another substance. On the surface of another substance is called adsorption. It's called adsorption. And what is absorption? Absorption is penetration of one substance in the interior of another substance. Penetration of one substance in the interior of another substance is called as absorption. Penetration of one substance on the surface of another substance is called as absorption. I'll give you one example which you must have seen, a day-to-day life example. If you go to jalebi wala shop, jalebi ka shop में, you के जलेबी का शॉप देखा कभी, जहाँ पे जलेबी फ्राई होता है, तैयार होता है? हाँ? Yes, sir. हाँ? देखा है ना? ओके. Yes, sir. एक शॉप को ऐसा बड़ा शॉप नहीं, छोटा मोटा शॉप है, बड़ा शॉप नहीं है, छोटा शॉप है. तो जलेबी वाले का शॉप में जलेबी ऐसा प्लेट में रखा रहता है और उसके ऊपर एक जार रहता है, यानी जाली रहता है ना? और Yes, इसमें sir. राइट, और ये सब जलेबी रहता है. Yes, sir. He covers the जलेबी with the ऐसा जाली वाला ऐसा ये टॉप रहता है ना, उसे कवर करता है. Yes. Now, if suppose he forgets to keep the jar over the surface, समझो विदाउट है, खाली जलेबी है, तो आपको क्या दिखेगा? हाँ? और ये जलेबी के ऊपर क्या दिखेगा आपको? बहुत सारा मक्खी जमा रहेगा इसके ऊपर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मक्खी जमा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा sir. Yes, sir. ए भाई, किसका माइक चालू है? प्लीज माइक बंद करो.
Anybody please check your mic. घर का आवाज आना इधर नहीं आना चाहिए. So on the surface of the jalebi, you'll find the flies are sitting. Flies are sitting. The flies on jalebi. On jalebis. बहुत सारा फ्लाइज रहेगा. फिर हाथ से भगा देता है, वो फ्लाइज भाग जाता है. दूसरा एक दुकान में बाजू का, वो भी जलेबी का दुकान है, उसमें भी प्लेट है और जलेबीज है, लेकिन उसका जलेबी में बहुत सारा एंड गैल है. क्या गैल है? And एंड का मतलब है मूंगी, काला 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 मूंगी, वो अंदर गया. So ants are on the surface or ant are inside the jalebi? On the surface. Inside jalebi. Inside the jalebis. अब दोनों भी difference क्या है? The flies are on the jalebi and ant are inside the jalebis. So this is absorption. And this is adsorption. Flies remain on the surface of the jalebi. They don't go inside the jalebis. But if ant enters, ant will go inside the jalebi because they eat the sugar or the liquid, sugary liquid, they go inside. Removing of ant is difficult unless you break the jalebis and separate them. Chota chota ants है ना काला वाला. So here one process is absorption, one goes in the inside and other is on the surface. Just for example, I gave you the example of water bottle containing water on the surface. The water is not going inside. The water remains on the surface. So that is an adsorption. So adsorption is a surface phenomenon where one substance get accumulated on the surface of another substance. One substance get accumulated on the surface of another substance. I'll give you one more example. I don't know whether you have seen that example or not. You take water, you take water and add few drops of ink, blue ink. You will get a blue color. It will be bluish in color. पूरा bluish color रहेगा. Okay. Ink, because of the ink that has turned into blue. Now what you do? To this you add activated charcoal. What do you add? Activated charcoal. Activated charcoal is just like a rawa. You know rawa? Rawa white color का होता है और activated charcoal काला color. Yes, You put activated charcoal powder and you wait for some time. You wait for some time. So all activated charcoal powder which is black in color, this is activated charcoal powder. And you wait for some time. After some time, what you'll find? After some time, what you'll find? The color has changed.
or color has become lighter. It is not possible for me to show. The color has become lighter. The blue color fades. Blue color fades. Activated charcoal the powder अंदर है. But the blue color of the ink fades. What happened to that blue color? Where that ink goes? If these are the ink particles, if these are the ink particles, right? The ink particle adsorb on the surface of the ink particle. Right? The ink, if these are the ink particle, the blue color adsorb on the surface of the ink particle. The color देख रहा हूँ, whether I can get some colors. Okay, I got it. On the surface of that, all on the charcoal particle, the ink particle will get accumulate. So the blue color is a ink particle which get adsorbed on the surface of the activated charcoal particle. Okay. They get adsorbed on the surface of the charcoal particles. So what is this? This is an adsorption. Ink particles are adsorbed on the surface of the charcoal particle. Ink particles are adsorbed on the surface of the ink particle, are adsorbed on charcoal particle. Okay. So that is an adsorption. Now in adsorption, okay. Okay. So these are the ink particle on the surface of the ऐसा हिल जाता मालूम नहीं. Okay. I'll rub this. Okay. So these are the ink particles which remain on the surface of the particle. So this process is called as adsorption.
So in adsorption, there are two parts. If I show you the diagram, here, see here. Here it is adsorption. Can you see the adsorption? Can you see the diagram? Yes, sir. The substance on which adsorption takes place is called as adsorbent. So this is activated charcoal. And this one is what you see is the ink particles. These are the ink particles. So ink particle get adsorbed on the surface of activated charcoal. So the ink particles are called as adsorbate and the charcoal particles are called as adsorbent, and the process is called as adsorption. So adsorbate get adsorbed on the surface of adsorbent. Adsorbate get adsorbed on the surface of adsorbent. It is called as, that process is called as adsorption. So adsorbate and one which get adsorbed. And adsorbent is a surface on which the adsorption takes place. That is called as adsorbent. So adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent, and the process is called as adsorption. Example, the ink particle is now adsorbate and the adsorbent is activated charcoal. If we then take the first example, jalebi wala, the flies are adsorbent, adsorbate, and the jalebi is adsorbent. If we take the example of here, the bottle, the plastic bottle is adsorbent and the water droplets are adsorbate. So adsorbate get adsorbed on the surface of adsorption. So this is the second definition. First definition I gave you is of adsorption. The first definition is adsorption, accumulation of concentration of a substance on the surface of another substance. On the surface of another substance is called as adsorption. Okay. Now, what is adsorbate? Adsorbate the material or the substance present on the surface of another substance is called as adsorbate. The material or substance present on the surface of another substance is called adsorbate. Example, ink is adsorbed. Ink particles are adsorbed on the surface of activated charcoal. Activated charcoal. What is adsorbent? Adsorbent, the substance which get
the substance which get adsorbed, the surface on the substance on whose surface adsorbate get adsorbed is called adsorbent, शेयर किधर गया? Yeah. So here is an adsorbate and adsorbent. Adsorbate gets adsorbed on the surface of adsorption. Okay. So this was adsorbate and adsorbent, and the process is called as adsorption. Now, there's another term called desorption. 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 What is desorption? When you brush your teeth in the morning with a toothpaste, using a particular toothpaste, and you brush it and you wash your mouth, you feel fresh. Why? Because the toothpaste is adsorbed on the surface of the teeth, and you feel the freshness till that toothpaste is on the surface of your teeth, and you feel the freshness. But as soon as you have a cup of tea, or you have a cup of coffee, or you have a cup of milk, that freshness goes away. Because what is adsorbed is removed. What is adsorbed, it get removed. This is called as desorption. The substance which get adsorbed is removed is called as desorption. So what is desorption? I'll give you the diagram of desorption.
See here. Yeah. So this is adsorption and desorption. See here, it comes on the surface. Is on the surface. It comes on the surface and it is removed. So this is desorption. This one is adsorption. This is adsorption. It is in the air and it is removed. So what is desorption? The process of removal of adsorbed substance from the surface. Is okay. The process of removal of an adsorbed substance from a surface is called adsorbed surface is called desorption. Is called desorption. So the toothpaste is dissolved from your teeth as soon as you have a cup of coffee or cup of tea, and you lose your freshness because of the desorption of the toothpaste. Okay. We'll take another term. We'll see sorption. Now, what is adsorption? See, we have seen adsorption. We have seen adsorbate. We have seen adsorbent. We have seen desorption. Abhi, sif sorption. What is adsorption? When you take a piece of chalk and dip it in the ink molecule goes inside the chalk and they also remain on the surface of the chalk. तो यहां पर दोनों चीजें हो रही. Chalk is absorbing ink and chalk is adsorbing ink. Chalk, when dip in the ink molecule are adsorbed on the surface and the ink molecule goes inside the chalk. So there is an adsorption as well as there is an absorption. And when both adsorption and absorption takes place simultaneously, it is known as sorption. When both adsorption and absorption takes place simultaneously, it is called as sorption. Why it is not okay? Here. What is sorption? When both adsorption and absorption take place simultaneously, then the phenomena is called as desorption.
cotton plus ink इधर दिया, or you can take chalk plus ink. There is a ink goes inside, अंदर भी ink दिखता है और बाहर भी ink दिखता है, right? So these are the ink. It is not cotton. If I take here chalk plus ink, this is the ink adsorb. And these are the ink gone inside. They are absorbed. They are absorbed. Okay, so that is called as adsorption. What is adsorption? Adsorption is a process in which phenomena in which both adsorption and absorption takes place simultaneously. Okay. Any doubt? Okay. Now question is, Sir, bolo. sir, we can say absorption as sorption because in absorption also the substance goes inside and there's some substance on the surface also. हाँ, दोनों चीजें होती. Ink को in some cases only it remains on the surface. अरे खाली surface पर ही रहेगा तो वो adsorption है. अगर वो substance अंदर जाता है तो वो absorption होगा. और कभी कभी दोनों चीजें होती है, अंदर भी जाता है और सरफेस पर भी रहता है. So that is called as sorption. Okay, चलिए. Now let us see what is the cause for adsorption. Cause for adsorption. Adsorption क्यों होता है? सर हाँ बोलो. अंडरवॉल फोर्स क्या है? हाँ बता दो, वहीं पर मैं आ रहा हूँ अभी. ओके वहीं पर मैं आ रहा हूँ. Cause for adsorption. कि मुझे अभी वो अंडरवॉल फोर्स देखा ना, तो अब मुझे एक्सप्लेन करना है ये क्या है. Cause for adsorption. Adsorption क्यों होता है? सबसे पहला एड्सॉर्प्शन कहां पर होता है? सरफेस पर होता है. यस, तो सरफेस पर क्यों होता है? वो सब्सटेंस अंदर क्यों नहीं जाता है? राइट, कुछ जगह पर ऐसा, जैसे हम दांत को घसते हैं, ब्रश करते, तो टूथपेस्ट कहां पर रहता है? हमारे टीथ के ऊपर रहता है कि टीथ के अंदर जाता है? ऊपर रहता है. यस, टीथ के ऊपर रहता है. सरफेस पर रहता है. कब तक? जब तक हम चाय और कॉफी नहीं पीते तब तक. जैसे चाय कॉफी पी जाएंगे, हमारा वो फ्रेशनेस चला जाता है, यानी जो चीज एब्जॉर्ब हो गई वो निकल जाती है. अब वो टूथपेस्ट और दांत के बीच में क्या है? कोई बंधन होगा ना. देयर मस्ट बी सम फोर्स, और वो फोर्स है वांडरवाल फोर्स. ये वांडरवाल फोर्स क्या है? ये फोर्स ऑफ बाउंडिंग, दो चीजों को बांध के रखना है. ये वीक है, बहुत वीक फोर्स है. वांडरवाल फोर्स इज अ फिजिकल फोर्स, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन फोर्स, राइट? इट इज कॉल्ड लंडन फोर्स. ये छोटे छोटे फोर्सेस है, ये वीक फोर्स होता है. तो एड्सॉर्बेट is adsorbed on the surface of adsorbent by van der Waals force, right? तो adsorbate और adsorbent के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को कहते हैं van der Waals force. आपको दिखा एक डंडा दिख रहा है इधर, डंडा van der Waals force का दिखा है? यस सर. वो डंडा is nothing but the force. Which force? van der Waals. वंडरवॉल. इंक मॉलिक्यूल को किसके ऊपर बांध के रखता है? चॉक के ऊपर, राइट? चॉक एंड इंक के बीच में एक बॉन्ड होगा और वो van der Waals फोर्स. ये वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है, यानी काफी वीक फोर्स है. जैसे अपना टूथपेस्ट हमारे दांत पर रहता है, और जैसे चाय, गरम चाय अंदर मुंह में आ जाती, वो बॉन्ड टूट जाता है, टूथपेस्ट निकल जाता है, पेट में चला जाता है. Right? This is a very cause. Now question है, what is the cause of adsorption? Adsorption क्यों होता है?
सबसे पहला एड्सॉर्प्शन सरफेस पर होता है. इट इज अ सरफेस फिनोमेना. It takes place only on the surface. But why it takes place only on the surface? If you take a solid, थोड़ा रफ सरफेस बना रहा हूं मैं. This is adsorbent. Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, Sir, screen यहाँ is पे not कुछ- visible. Not visible? Okay. सर आप जहाँ बना रहे हो वो दिख नहीं रहा है. हाँ वो तो दिख रहा है, आप बना मैंने रहे हो. share पहले किया. का दिख रहा है, आप जो बना रहे हो वो नहीं दिख रहा. सर ऑप्शन दिख रहा है. हाँ, हाँ सर, नहीं दिख रहा है. अब दिख रहा है. अब कुछ नहीं दिख रहा है ओ सर. सर स्क्रीन गायब हो गया. शेयरिंग मत कर दी आपने. अब दिख रहा है. हाँ दिखा दिखा हाँ सर. सर. यस सर, हाँ अभी दिख रहा है. ये एड्सॉर्बेंट है. यस है ना. हाँ हाँ दिख रहा हाँ है हाँ सर. हाँ. ये एड्सॉर्बेंट है. इसका सरफेस है. अब ये बताओ एड्सॉर्बेंट क्या हो सकता है. सॉलिड हो सकता है. एड्सॉर्बेंट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, दोनों हो सकता है. मैं प्रेजेंट केस सॉलिड लिया. अब इसके ऊपर क्या एड्सॉर्ब होता है. एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होता है. तो ये एड्सॉर्बेट. क्यों होता है. इनके बीच में बॉन्ड है. कौन सा. वंडरवॉल फोर्स. वंडरवॉल फोर्स. अब एड्सॉर्बेंट के अंदर जाते हैं. एड्सॉर्बेंट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. बहुत सारे पार्टिकल्स, उसके खुद के पार्टिकल्स है. चाहे एग्जांपल चॉक है तो चॉक के पार्टिकल्स होंगे. और हर एक पार्टिकल एक दूसरे को ज्वाइन किए होंगे. अट्रैक्शन होगा. There is a force of attraction between all the particles. लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं, जो पार्टिकल सरफेस पर होते हैं उनको सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन जो अंदर होते हैं उनको सब पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं. The particle which are inside, they are attracted by all other particles. But the particle which are on the surface, they are attracted by the lower particle. ऊपर के फोर्स उनके खाली रहते हैं. जो पार्टिकल सरफेस पर रहते हैं उनके ऊपर के फोर्स खाली रहते हैं. नीचे वाले अट्रैक्ट करते हैं लेकिन ऊपर के फोर्स उनके खाली. तो पार्टिकल विच आर ऑन द सरफेस, दे हैव गॉट फ्री फोर्सेस ऑन द सरफेस. The particle which are on the surface, they have free forces on the surface. इस free forces को कहते हैं residual force. Which force? Residual force. Residual force. यानी बचा हुआ फोर्स. अब एक्सक्यूज मी सर. हाँ. सर वापस एक बार समझाओ ना. The particle which are inside, they are attracted by all other particles. Right? अगर मैं उसको और अच्छी तरह डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, इतने सारे डायग्राम के बजाय 2-3 पार्टिकल बता दिए तो बस हो गया. So this is adsorbent. ये पार्टिकल्स है. कुछ ऊपर वाले पार्टिकल्स है जो सरफेस पर होते हो पार्टिकल्स है.
जो अंदर होता है वो सबसे अट्रैक्टेड होता है, देखो। लेकिन जो ऊपर होता है वो सिर्फ नीचे वाले से ही अट्रैक्टेड रहता है, ऊपर के फोर्स उसके खाली रहते हैं। ऊपर के फोर्स वो खाली रहते हैं। तो पार्टिकल which are on the surface, they are attracted only at the lower side, but they are not attracted by the upper side. ऊपर को है ही नहीं उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो भी पार्टिकल सरफेस पर होगा उसके कुछ फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, राइट। इस फोर्सेस को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अच्छा वर्ड याद आया मुझे, अनबैलेंस फोर्सेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिडुअल फोर्सेस। तो हर एड्सॉर्बेंट पर रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं। तो जब एड्सॉर्बेंट आता है तो एड्सॉर्बेंट को, जब एड्सॉर्बेंट आता है तो एड्सॉर्बेंट को उस फोर्स से वो पकड़ लेते हैं, राइट। राइट, सो दिस followed. So this is adsorbate. जब इन पर आता है तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्ब के बीच में फोर्स हो जाता है, और वो कौन सा फोर्स यूज करता है? अनबैलेंस फोर्स और रेसिडुअल फोर्स, जिसको हम कहते हैं वांडर वाल फोर्स। यस, unbalanced force or residual force, which is called as van der Waals force. So what is the cause of adsorption? Adsorption, the cause is due to presence of residual forces or unbalanced forces on the surface of adsorbent. Okay, on the surface of adsorbent. So what is caused by adsorption? Due to presence of residual forces. अब मुझे ये बताओ बच्चे लोग, ये एड्सॉर्बेट है और सॉरी एड्सॉर्बेंट है, लेकिन ये पॉलिश है। क्या है? पॉलिश है। और ये भी एड्सॉर्बेंट है, ये भी एड्सॉर्बेंट, वही एड्सॉर्बेंट है, लेकिन ये रफ है। रफ है और व्हाट वी कॉल एज अनपॉलिश सरफेस, अनपॉलिश एड्सॉर्बेंट। अब मुझे बताओ दोनों में से किस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा? रफ सरफेस। रफ सरफेस पर। क्यों रफ सरफेस पर ज्यादा होगा? कि उधर अनबैलेंस फोर्सेस ज्यादा रहे। पॉलिश सरफेस पर अनबैलेंस फोर्सेस बहुत कम रहे। बोलेंगे उधर भी अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, लेकिन पॉलिश है तो इतने ही होंगे, राइट। ये अनबैलेंस फोर्सेस। सर पॉलिश करने से क्या हो जाएगा? पॉलिश यानी एकदम प्लेन रहेगा, प्लेन। और ये सरफेस, ये प्लेन है नहीं, ये रफ है, राइट। तो इधर भी पार्टिकल्स, इधर भी पार्टिकल्स, इधर भी पार्टिकल, number of particle on the surface will increase. Number of particle on the surface will increase and unbalanced forces will increase.
रफ होता सरफेस तो अनबैलेंस फोर्सेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज पार्टिकल सरफेस के पार्टिकल बढ़ जाते हैं। नहीं समझा? डू यू डोंट एग्री विथ मी? Yes. Yes, sir. Yes. Right? So if the surface is rough, more the surface rougher, more will be the unbalanced forces. And if the surface is plain or it is a polish, there will be unbalanced forces, but there will be fewer unbalanced forces because number of particles are few. Okay? Example, यही example को देता हूं। इसकी लेंथ समझो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ कितनी है? दिखने में 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इस सरफेस को अगर खोल देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अंदर कर्व है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. तो ये 15 Yes, सेंटीमीटर sir. वो रफ, वो कर्व को तो हम नहीं काउंट करते, अंदर का डिप्रेशन, अंदर का वो, उसको काउंट नहीं करते। जब हम एक्सटेंड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर दिखने में 10 है, लेकिन एक्चुअली है 15 सेंटीमीटर। डू यू एग्री विथ मी? यस Yes. यस सर। Yes, sir. कर्वनेस है ना, अंदर का डिप्रेशन, बाहर आता, अंदर बाहर, उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो 15 सेंटीमीटर होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर। The adsorption always take place more on the rough surface. ऐसे नहीं कि प्लेन सरफेस पर नहीं होता, प्लेन पर भी होता है, लेकिन रफ सरफेस पर ज्यादा होता है, बिकॉज रफ सरफेस रहेगा तो सरफेस एरिया बढ़ता है। रफ सरफेस have a more surface area than the polished surface. And adsorption is a surface phenomena. जो कुछ है सरफेस पर ही होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो adsorption भी बढ़ेगा। Got my point? So adsorption, Yes, sir. the main cause क्या है? Yes, sir. Due to presence of residual forces or unbalanced forces on the adsorbent. अगर अनबैलेंस फोर्सेस को बढ़ाना है तो सरफेस को पॉलिश पेपर से घस लो, रफ बन जाएगा। राइट? तो ये होगा कॉज। अब देखेंगे व्हाट इज कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? कुछ पता है? स्पंज पानी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है? करता है, sir. करता है Yes, sir. करता है। सर। क्यों करता है? सर वो Yes, sir, ऑब्जेक्ट करता के है। बीच में अंदर स्पेस जगह होती रहती है है तो बीच वो में space ऑक्यूपाई होता करने है। के लिए, हाँ, वो स्पेस स्पंज के होती है बीच में उसको जो ऑक्यूपाई space है। करने। क्या होते हैं? छेद होते हैं ना, उस यस सर। Space. Yes, sir. क्या कहते हाँ, हैं? sir. पोर्स होते, पोर्स। Pores होते हैं, pores. Right? So more the porous surface, more will be the absorption. So absorption is due to presence of pores. तुम्हारे दांत पोरस है? नहीं। No, sir. No, No, sir. 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 No, sir. तुम्हारे दांत एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। Sir, example sponge. स्पॉन्ज इज अ पोरस। लेकिन फिर आपने ऐड देखिए टूथपेस्ट की, Yes, sir. Yes, तुम्हारे sir. दांतों के अंदर ये चला जाता है, कौन जाता है? टूथपेस्ट कभी जाएगा? नहीं, sir. नहीं, No, sir. बिल्कुल नहीं सर। बेचने के लिए पोरस है? बता रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं, Sir, sir. नमक जाता है, मेरे नमक। फूलिंग यू, इसमें नमक है तो तुम्हारे दांतों के जड़ों में जाता है। अरे कहां से जाएगा? पता नहीं, sir. Teeth are not porous. Your teeth only absorb. It doesn't absorb. Okay, so absorption is due to porosity. Porosity बोलेंगे. What is porosity? The property of possessing pores is called as porosity. Right? The property of possessing pore
is called porosity. तो जो चीज पोरस होगा वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, और जो चीज पोर्स होते हैं तो उसमें सरफेस होते एंड इट में ऑल्सो एब्जॉर्ब. तो एक्टिवेटेड चारकोल और द चॉक is absorbing as well as absorption, दोनों चीजें करता है. So there is absorption takes place due to porosity. Okay, so let's see now types of adsorption. There are two types of adsorption. Type of adsorption. There are two main types of adsorption. There are two main types of adsorption. Based on type of bond between adsorbate and adsorbent. There Physical are and two types chemical. of adsorption based on type of bond between adsorbate and adsorbent. This is adsorbent. This is also adsorbent. And this is adsorbate. These are adsorbate. If the adsorbent or adsorbate के बीच में van der Waals force होगा, if this force is van der Waals, then we call this as physical adsorption. We call it as a physical adsorption. If the bond between the adsorbate and adsorbent is chemical bond, if this bond is chemical bond, then we say it is chemical adsorption. सर पता कैसे चलेगा केमिकल बॉन्ड है कि physical? हाँ, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मुझे. मैं तुमको टाइप ऑफ adsorption बता रहा हूं. Okay. There are two types of adsorption: physical adsorption and chemical adsorption. Okay, physical adsorption and chemical adsorption. Okay. Chalk adsorb ink, physical adsorption. Rusting of iron, जाली के ऊपर, तुम्हारे ग्रिल के ऊपर डस्ट जमता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Chemical absorption. वो बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड किसके बीच में? ऑक्सीजन और आयन के बीच में.
There is a chemical bond. That is chemical adsorption and physical adsorption and chemical adsorption. So there are two types of adsorption based on the type of bond between adsorbate and adsorbent. Okay, so we have covered today what is adsorption. We have seen what is absorption. Yes, sir. Right? We have seen adsorbate. We have seen adsorbent. We have seen what is the meaning of absorption. We have seen the meaning of desorption. We have seen physical adsorption and chemical adsorption. We have seen the cause of adsorption. We have seen the cause of absorption. यानी बेसिक चीजें हमने स्टडी की आज. ये सब नई चीज थी तुम्हारे, ये मुझे मालूम है. Now we'll see distinguish between adsorption and absorption. Adsorption and absorption के बीच में क्या मेन डिफरेंस है? Can you tell me the very first point? अब इतना सारा तुमने पढ़े हो, एक डिफरेंस तो बताओ. In adsorption, सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस पर होता है, और एब्जॉर्प्शन सरफेस के अंदर. Inside the substance. पार्टिकल. it is a surface phenomena. particles are concentrated on the surface. It is a surface phenomena. And it is a bulk phenomena. Bulk means under. It is a bulk phenomenon. Second, Sir, it's depend upon sir, absorption is depends upon temperature and pressure, and absorption is independent of temperature and pressure. क्या मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो? एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड होता है, क्या मीनिंग इसका मीनिंग होता है? एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड होता है? एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर पर क्यों नहीं डिपेंड होता है? वी शुड हैव सम रीजन. क्या रीजन है इसको? पहले हम छोटे छोटे पॉइंट जाते हैं, फिर बड़े बड़े पॉइंट लेते हैं. Concentration of absorbate is more on. It is due to, देखो जो चीज मैं पढ़ाया हूं उसी के ऊपर मैं सो बोल रहा हूं, अभी तक मैं आगे चीजें नहीं बता रहा हूं. It is due to presence of रेसिडुअल. very good residual forces. देखो जो पढ़ा है उसी पर डिस्कस करेंगे. It is due to porosity. Very good. आगे अब तीसरा पॉइंट. It depends upon surface area. More the surface area, more will be the adsorption. Yes, no? It is Yes, independent of surface area. देखो ऐसे पॉइंट्स को जमा करने के of surface area. चलो, जब तुम सुबह सुबह ब्रश करते हो, मैंने एक ब्रश का टूथपेस्ट का ही एग्जांपल मैं पकड़ रहा हूं कि बहुत आपके नॉलेज में है, इसलिए there are any other examples also there. जब तुम ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद आपको क्या फील होता है? फ्रेशनेस. फ्रेशनेस, ठंडा ठंडा कूल फील होता है. यस सर. यस, है ना?
ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है, यू फील द फ्रेशनेस। तो अब मैं बताता हूं वो फ्रेशनेस क्यों कूल होता है, व्हाई यू फील दैट फ्रेशनेस। सर मिंट। ये तुम्हारे दांतों की बनावट है, सॉल्ट। ये तुम्हारे दांत है, इस पर टूथपेस्ट जम जाता है, एड्सॉर्ब होता है। टूथपेस्ट और दांत के बीच में क्या बॉन्ड होता है? वंडरवॉल। वंडरवॉल। एंड जब भी बॉन्ड बनता है तो हीट निकलती है, हीट बॉन्ड। So when the toothpaste get adsorbed on the surface of your teeth, heat is evolved and you feel ठंडा ठंडा cool cool। तुम्हारे दांत में से हीट निकलती है एंड तुम्हारे दांत को ठंडा फील होता है, फ्रेशनेस फील होता है। So adsorption is an exothermic process. When one substance gets adsorbed on the surface of another substance, heat is evolved. It is an exothermic process. You know what is exothermic process? The process in which heat is evolved. And process in which heat is absorbed is called as endothermic process. जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Got my point? Yes, sir. So it is exothermic process. It is endothermic process. यानी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। Sorry, it is neither endothermic nor exothermic. न हीट इवॉल्व होती न हीट एब्जॉर्ब होती। Fifth point, heat is evolved, so that means it depends upon temperature. जो चीज एब्जॉर्ब होती, चाय पीने के बाद वो जो चीज एब्जॉर्ब हो गई क्या होती, निकल जाती है कि नहीं? Yes, sir. Because exothermic process. So it depends upon temperature. And pressure. It is independent of temperature and pressure. It is independent of temperature and pressure. Okay. It is independent of temperature and pressure. Okay. कहाँ पे है पागल? इसमें यही प्रॉब्लम। It is reversible. What is reversible? It is irreversible. जो चीज एब्जॉर्ब हो गई वो डिसॉल्व हो सकती है कि नहीं? हो सकती है सर। और वो हो गया, तुम्हारे दांतों के ऊपर का टूथपिक चला गया,
हाँ सर गया। गया ना? सर चले गया। तो इट इज रिवर्सिबल और सुबह वापस आ जाएगा। इट इज इरिवर्सिबल। ये जो अंदर गई वो बाहर नहीं आ सकती, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर चौक ने इंक ले लिया तो इंक ले लिया, वो ब्लू बनेगा, उसमें से इंक वापस निकाल नहीं सकते चौक। हाँ, it cannot be removed. If a chalk absorb the ink, it will absorb ink, but you cannot remove the ink from the chalk. बट सर स्पॉन्ज के अंदर पानी जाता है तो बाहर भी आ सकता तो वो पानी जाता है, लेकिन पानी स्पॉन्ज को हाथ लगा तो गीला रहता है कि नहीं? सर लेकिन वो तो बाद में सूख भी जाता है। Yes, sir. इवापोरेशन करते हैं, इवापोरेशन करते हैं। आपको पानी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा? आपको वेपर के फॉर्म में मिलेगा। पानी गया लेकिन वेपर बाहर गया। पानी पानी के फॉर्म में नहीं आता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है, लेकिन वेपर के फॉर्म में चला जाता है। इट इज इवेपोरेटेड। So it is reversible, it is irreversible. Yes. Okay, so this is okay. So ये है एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इज इवॉल्व एंड एंडो का मतलब हीट इज एब्सॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन में न हीट इवॉल्व होती न हीट एब्सॉर्ब होती, लेकिन एड्सॉर्प्शन में हीट इवॉल्व होती। मैंने 6 पॉइंट दिया। Okay, so this is a distinguish between adsorption and absorption. Now we'll see physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption and second is chemical adsorption. दोनों को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं देखता हूं मेरे पास वो शेयरिंग है क्या, गया वापस? नहीं, ये तो दिख रहा है? नहीं No, sir. नहीं नहीं दिख रहा। मैं वो ही मैं लिख रहा हूँ, ला रहा हूं मैं। ओके, अब देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। मैं प्रिंटेड लाया। ओके, सी पहला पॉइंट देखो,
The force operating in this case is our van der Waals forces. The force operating a chemical bond. Means what? van der Waals physical adsorption में adsorbate और adsorbent के बीच में कौन से force है? वंडरवॉल वंडरवॉल And Van der chemical Waals adsorption force. में कौन से force है? Chemical bond. केमिकल बॉन्ड्स It can be Chemical Ionic- bonds. chemical bond. covalent bond. Yes, it can be ionic bond or in the conical. ये covalent bond. दोनों एक्सोथर्मिक है, दोनों में हीट इवॉल्व होती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में. लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कितनी होती? 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल. एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखो 40 to 400 किलो जूल्स पर मोल. दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब इतना हीट इवॉल्व होती है इसमें. हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या कबर्ड के अंदर हुआ? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट. अच्छा ये नीचे. Yes, sir. ओके. तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, यानी इसमें कम हीट निकलती है और इसमें ज्यादा हीट निकलती है. देखो कम से कम 40 और ज्यादा ज्यादा 400, और इसमें कम से कम 20 और ज्यादा ज्यादा 40. देखो इधर का मैक्सिमम, इधर का मिनिमम होता. क्यों? बिकॉज फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड वीक रहते, तो कम हीट निकलती. जब भी बॉन्ड बनता है, चाहे वो फिजिकल बॉन्ड हो या केमिकल बॉन्ड है, हीट इज इवॉल्व्ड. If the bond form is strong, more heat will be evolved. If the bond form is weak, less heat will be evolved. So the heat evolved in adsorption is called heat of adsorption. So heat of adsorption दोनों के लिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए भी है और फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, लेकिन केमिकल के लिए ज्यादा है एंड फिजिकल के लिए कम है. Then प्रोसेस फिजिकल, मैंने पहले क्या बोला था? एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस और एब्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्यों? Desorption can occur by increasing temperature, TMP है, और decreasing the pressure. जो एड्सॉर्ब हो गया वो हम वापस डिसॉर्ब कर सकते by increasing the temperature or by increasing the temperature by decreasing the pressure. एग्जाम्पल, दांतों के ऊपर जो टूथपेस्ट जमा रहता है वो निकल जाता है क्योंकि हम गर्म चाय पीते हैं. हमारे माउथ में, in our mouth we increase the temperature by taking a hot tea. So hot tea होने से बढ़ जाता है, जो वो बाहर निकल जाता है, इट डिसॉर्प्शन हो जाता है. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो एड्सॉर्ब हुआ वो निकल जाता है, लेकिन वो फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में निकलता है. एग्जाम्पल, जब ग्रिल के ऊपर रस जम जाता है, तो जब हम ग्रिल को साफ करते, ऑक्सीजन बाहर निकलता है? नहीं. क्या निकलता है? रस निकलता है. रस्ट. और नया वो रस्ट निकलता है. रस ना ऑक्सीजन है ना आयन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो. Effort to free the adsorbed gas has a different compound. देखो उधर लिखा है, it give you different compound. कहाँ दीजिए, राइटिंग में यही प्रॉब्लम होता है.
यही था ना, दिख रहा ना वो? कैन यू सी? No, sir. Sir, No, sir. absorbent and absorbent. एक मिनट. Okay. Now you can see. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, physical absorption. एक मिनट. Now you can see. Yeah. Yes, sir. Will be. Yes, sir. So effort are made to free the adsorbed gases. Adsorbed gas को हम free करते, but it give a different compound. ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है, ना आयन निकलता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन रस बाहर निकलता है. Sir, fifth Absorption. point के नीचे नहीं दिख रहा है. हाँ, Fifth point के नीचे नहीं दिख रहा है sir. कौन से पॉइंट के नीचे? Fifth point. फिफ्थ पॉइंट आप दिख रहा है? No sir. No, sir. फिफ्थ So पॉइंट के only नीचे नहीं 5 दिख रहा है. points are visible. हाँ, Only 5 points are चले visible. आगे दिखेगा, डजंट मैटर, वो दिखेगा. Yeah, sir. वो फिफ्थ पॉइंट के नीचे दिखेगा नहीं, आगे दिखेगा तुमको. It now adsorption does not require, physical adsorption does not require any activation. एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगती, डायरेक्टली फिजिकल एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली होता है. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगती है. रस निकालने के लिए क्या करना पड़ता? पहले गर्म करना पड़ता, एंड देन द रस विल कम आउट. So if you can avoid the fourth point, will do. It does not require any activation energy. It requires activation energy. Fourth point. यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन करना है तो पहले हमको एड्सॉर्बेंट को कुछ ना गर्म करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, डायरेक्टली एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो जाता है. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब करने के लिए पहले एड्सॉर्बेंट को हीट करना पड़ता है. You have to heat it. We have to heat it. Okay. Physical adsorption takes place at low temperature, and chemical adsorption takes place at high temperature. जितना टेम्परेचर लो रहेगा उतना ही फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है. Lower the temperature, more will be the adsorption. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. See, it takes place at low temperature. See the fifth point. It takes place at low temperature, and it decreases with increase in temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होगा. This type of adsorption increases with increase. जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना ही केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. अब तुम लोग को नहीं दिख रहा है ना? अब दिखेगा. दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर. अभी दिख रहा है? No. नहीं दिख रहा है. No, सर थोड़ा sir. नीचे स्क्रॉल करो. Doesn't matter. अब दिख रहा है? No. No sir. No, sir. वो दिख रहा है. No, sir. क्यों नहीं दिख रहा है अभी?
You can see now. No, sir. No, sir. 6 point is Sir, not scroll seen. करो. No. Now you can see. अभी दिख रहा है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. कौन सा 6 sir. पॉइंट नहीं दिख रहा है? सर फिर भी आधा ही Yes, दिख sir. रहा है. 6 point is सर not visible. टेम्परेचर sir. एंड के बाद नहीं दिख रहा है. 6 पॉइंट वो 5th पॉइंट तक दिख रहा है. Only the पूरा नहीं दिख रहा है सर. हाँ? फिर आधा भी दिख रहा है. टेम्परेचर वो एंड half आ temperature गया दिख है. रहा है. फर्स्ट इंक्रीज उतना ही. क्यों हो गया ऐसा? सर इसके पहले पूरा दिख रहा था. Now you can see. Yes, sir. Yes, Now you sir. can see, no? Okay. Yes, Now, Yes, sir. now you can see, no? Okay. Now it takes place at low temperature. अभी 6 point देखो. It is non-specific. Non-specific का मतलब non-specific का मतलब ये किसके बीच में भी हो सकता है. Physical adsorption can take place between anyone